and a warm welcome to Sattva 2022, powered by Hooper. My name is Dia. And I'm Purav, and we'll be your host for this fabulous evening filled with creativity and full on entertainment. So, here we are with our final event of the day, that is Mono Act, where we bring to you participants from all over the country showcasing the art of enacting a theatrical act presenting themselves as one existing character. यार मोनो एक्ट में जितना ड्रामा देखा है मैंने उतना माँ कसम कहीं पे नहीं देखा. आई डू नॉट बिलीव इतने टैलेंटेड लोग आते कहाँ से है यार. I agree with you, Pooja. But before we start, I'll quickly brief you all with the rules and guidelines of the event. There is no originality criteria, there's no topic that we have given you. Obscenity and offensive gestures are strictly not allowed. Decision of the judges will be final and binding. While shooting the video should be one shot video without any cuts. Participants should be visible in the camera frame throughout the video. Video should be strictly in landscape or horizontal mode. Performance time would be 2 to 4 minutes. Video editing is not allowed, and video should be sent to the performing arts team before the deadline. The language would be Hindi or English. A true artist can cherish the hard work and innocence of a fresh talent. Allow us to introduce to our judges for the evening. The first judge for the evening would be Vritti Vaghani, Indian actress and a model, especially known for Jai Shri Krishna and Hope or Hum. She also worked in advertising for more than 100 deputed commercials and developing her acting career. In 2020, she was featured in Disney Plus Hotstar web series Arya, starring Shushmita Sen, Chandrachud Singh, and Sikandar Kher. So, our second judge for the evening is Mr. Ayush. Well known for his film My Friend Ganesha 2 as a child actor, he is also known for his works in Uttaran, Navya, Mahabharat, Surya Putra Karn, and is also being featured in an upcoming international film called Night and Fig. Night and Thank fog. you. We are Okay, so really sorry. sorry about that. Night and Fog. No problem. Thank you to both the judges for being a part of Satva and making our event even more graceful with your presence and expertise. Thank you so much for अच्छा having us. अच्छा दिया, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है. तुम्हारे पास क्या है? अरे हमारे पास talented monologue participants हैं and I can't wait to see their performances. All the best to each and everyone, and may justice prevail. So, our first performer for the evening would be Atharva Joshi. Boy, do we have problems up here. About the problem of evil in this world, the problem of absolute virtue, the problem of you And also we on top just of pay from the everything else. YouTube link, You right? above all. Yes. Boy, do we have problems up here. About the problem of evil in this world, the problem of absolute virtue, the problem of you on top of everything else. You above all. Because that's what God is, right? Horus, Apollo, Jehovah, Caleb, Clark, Joseph, Kent. See, what we call God depends upon our tribe, Clark Joe. Because God is tribal. God takes sides. No man in this kind of being when I was a boy, it's first time Bob, I have to get a way back. And if God is all powerful, he cannot be all good. And if he's all good, he cannot be all powerful. And neither can you be. They need to see the fraud you are with their eyes, the blood on your hands. And tonight they will, yes, because you, my friend, have a date. Across the bay, right from his head. 2 years ago, but it did not take much to push him over, actually. Red notes, big bang, you let your family die. And now you will fight him, and you will battle him to the death. Black and blue, fight night. The greatest gladiator match in the history of the world. God versus man. Day versus night. Son of Krypton versus Bat of Gotham.
And if you're wondering why will you fight him, I think you will fight. I think you will fight with a special lady in your life. Louis, you're close, but I'm not talking about Louis. No. Every boy's special lady is his mother. Martha, Martha, Martha. And now the mother of a flying demon must be a witch. And the punishment for witches, what is that? That's right, death by fire. And if you're wondering where is she, I don't know where she is. Now, if you kill me, Martha dies. If you fly away from here, Martha also dies. But if you kill the bat, Martha lives. There we go. Calm down. There we go. And now God bends to my will. And now the cameras are waiting at your ship for the world to see the holes in the holy. Yes, the Almighty comes clean about 30s when it counts. To save Martha, bring me the head of the bat. Oh, and yeah, Mother of God, would you look at the time? When you came here, you were an hour. Now it's less. Thank you. Criteria would be according to characterization, presentation and delivery, confidence, and overall performance. The each criteria would be of 5 marks, so the total would be of 20 marks. And you can, enter the marks in the sheet provided to you, as well as if you want to add any other criteria, you can just let us know if you want to add any other criteria. I am considering that you don't want to add any other criteria, and just to confirm that you are watching the videos via the YouTube stream, right? Yeah, this is getting confusing. Okay, wait. I Okay, actually so do not have the marks, I mean the sheet. So, it will be sent to you via WhatsApp. Actually, you already got that, I think. Can you let just me check check. your WhatsApp? Yeah. Yeah. You got the link, right? Yeah, okay. So we'll start with the next performance. We have Uncle Mishra performing for us the next. I've got the sheet, but I'm not able to add marks to that. We'll check that. Just give us a second. And this guy wasn't audible only. Okay. We are so sorry for all the issues that we are facing. We'll get back to you.
है सर। हमारे पिताजी को गाली दिए, माँ की, बहन की, बेटी की। हम यही सर, यही पीछो पीछ 3 गोली मारे। 3 गाली 3 गोली, हिसाब बराबर। नहीं सर, नहीं। अरे सर आप इतना, अरे इतना मारे हैं ना सर, मेमोरी लॉस हो गया हमारा। बता दो सर, बता दो, बताता हूँ। रात का वक्त था और दारू पी के जा रहा था। हम पीछे से उससे पूछे, भाई कहाँ जा रहा? वो पीछे मुड़ा, हमको गाली दिया। ठीक था, यहाँ तक ठीक था सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाप को गाली दिया, और जैसे हम बाप के लिए माँ बहन बिटिया की गाली सुने, हम उसको सराई से पकड़े, नीचे में निकाले, मारते 3 गोली, वो पीछे पीछ मर गया। जैसे मारे रस्ट इन पीस, तुरंत सर, तुरंत चला गया। हमको तो बात करना था इससे, बात करना, क्या करें? हम ऐसे बैठे रहे। देखे कि बाजार में कोई है तो है नहीं, रात तो है, क्या करें? बात करना था मुझसे। हमें वहीं पे सर, हम 1000 गाली इसको बना के 1000 गाली मारी है सर, वहीं पे। हमको उसके बाद भी चैन नहीं आया सर, चैन नहीं आया हमको इसका मुंह देख कर नहीं समझ आ रहा था, इतना खुश कैसे है मरते टाइम। हम तुरंत वही अपनी चप्पल उतारे सर, यही वाली, ये चप्पल उतारे, हम 4 चप्पल उसी टाइम पे इसको इतना मारे हैं। बोले तुम बाप को गाली दोगे, नौकरी करते हैं, नौकर नहीं है तुम्हारी, वहीं को मारे, कितना खाओगे तुम साला। इतनी हिम्मत इनकी सर, ये हमारे बाप इनके यहाँ नौकरी करते हैं, नौकर नहीं है। हमको अभी भी चैन नहीं आया सर, हम देखे क्या करें। हमको इनका मुंडी देख के से इतना What are we waiting for, guys? देखिए बगल में वहाँ अद्धा मिला, माथा उठाए, तुम्हारे We have प्रिंट a आउट, performance going on तुरंत right प्रिंट now, आउट हो I गए think, सर। on YouTube. हमको जाके चैन आया थोड़ा सा। Okay, the second one. रोते रोते घर आया। Yes, the पहली second बार performance. हमारे गांव में इज्जत है हमारे बाप की, हमारे लिए कमाता है, नौकरी करता है, नौकर नहीं इनका, गाली देंगे। नहीं बोलूंगा, सॉरी ना बोलूंगा सर, मालूम है ना, आज मेरे को मारेंगे ही।
क्या कर लेंगे? मार दे, जान से मार दे, चाहे जैसे मारना मार दे सर। इस आदमी के लिए ना एक सॉरी ना बोलूंगा, जो किया सही किया। तो आप सब मुझसे यहाँ ये पूछने के लिए आए हैं कि वाई डज द इंडियन आर्मी That was such a powerful performance. So the next performer is Sajal Sond. want war एंड आप लोग जो घर बैठे हैं यू गाइस वांट पीस राइट। मेरा एक दोस्त हुआ करता था गुनरीत, उसे ठंड का मौसम बहुत पसंद था, पर ये दिल्ली वाली ठंड नहीं, कश्मीर की ठंड। हम लोग तो बंकर में जाके अपने अपने कैरो हीटर्स के सामने बैठ जाया करते थे। वो अकेला था जो अपनी कार्गो यूनिफॉर्म उतार के 200 पुशअप मारा करता था एंड बोला करता था, ओ पाजी योलो, यू ओनली लिव वंस। एकेडमी में सेम ही क्लास में थे हम लोग, तो एक साथ ही क्लास जाना और एक ही दिल उस्ताद की जूतों की मार खा खा कर हम लोग ऑफिसर बने और फिर एक साथ पोस्टिंग भी आ गई कश्मीर में। करीब करीब एक साल पहले की बात है, हमें ऊपर से ऑर्डर मिला कि हमें ऊपर ब्रावो यूनिट को ज्वाइन करना है। उस दिन 8-9 घंटे से लगातार स्नोफॉल हो रही थी। हम लोग रास्ते में ही थे कि गुनरीत मेरे पास आता है। वो मुझे कहता है, ओ पाजी, इस मौसम में सिगरेट पीने का तो मजा ही अलग होगा। मैं अपना हाथ अपनी जेब में डालता हूँ सिगरेट का पैकेट निकालने के लिए, पर वहां ठंड इतनी होती है कि मेरे हाथ सुन पड़े होते हैं, तो पैकेट नीचे गिर जाता है। मैं पैकेट उठाने झुकता ही हूँ कि गुनरीत अपना सिर मेरे कंधे पे रख लेता है। मैं हंसते उसकी तरफ देखता हूँ और उससे पूछता हूँ, अरे क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है। वो कहते हैं ना, मौत बिना दस्तक दिए आती है। वो गोली शायद मेरे लिए थी, पर उस पे नाम गुनरीत का लिखा था। So to answer your question, sir, the Indian Army does not want war. तो जब दूसरी तरफ से आपके ऊपर लगातार गोलियां चल रही हो, तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जरूरी हो जाता है, अपनी और आप सबकी सुरक्षा के लिए। उस दिन मेरे दोस्त, मेरे साथी गुनरीत ने मेरे सामने अपनी आखिरी सांसें ली और मैं चाह कर भी उसे बचा ना सका, क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर मिल गए थे कि हमें हमारी पोजीशन होल्ड करनी है। हम अपना हर दिन आखिरी दिन की तरह जीते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता हम अगले दिन का सूरज देखेंगे या नहीं। Even Lieutenant Gundreet didn't want war, sir. He just wanted India to be safe. बहुत आसान है अपने घर पे बैठ के पिटीशन साइन करना। आप सड़क पर आइए, आपको असलियत का पता चलेगा। गालिब साहब ने कहा है, मरते हैं मरने की आरज़ू में, मौत आती है पर नहीं आती। शेक्सपियर ने कहा है, द रेडीनेस इज ऑल। और अपना गुलरीता कहता था, ओ पाजी योलो। That was such a mesmerizing performance. And I would like to request the judges to, stay muted while the performance is going on so that we don't have any overlap with the audio. So I would like to now ask for the next performer. It's Jitesh Rahija.
नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं अब आप? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप बच गए। अरे थैंक यू किस लिए बोलते हैं? लोग तो मुसीबत में गैरों की मदद करते हैं, और आप तो फिर भी हमारे अपने हैं। आपके बहुत एहसान है हम पर। आप चाहे हमें चोर, डाकू, गुंडा कुछ भी समझे, पर हम आपकी दिल से फुल इज्जत करते हैं। और हमें ना पता है कि आप पर किसने हमला करवाया, और खुंदक तो इतनी है कि उसको उसके घर जाके मार डालें। फिर सोचते हैं कि हम खुद पे कैसे हमला करवा सकते हैं। जी हाँ, हमने ही आप पर हमला करवाया था, और इसमें हमारी कोई गलती नहीं। ये तो साला हमारा खून ही ऐसा है। आपको बोले थे ना कि सारी जमीन जायदाद हमारे कंधों पे रखकर अब गंगा नहाए, पर नहीं, आपको तो बनना है शहीद भगत सिंह, कभी झुकना ही नहीं। पर मुझे झुकाना आता है। अब ना हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हम तो पैदा भी 6 महीने में हो गए थे। लोगों को लगा हम गए, पर हम बच गए। पर इस बार आप नहीं बचेंगे, समझे? चलते हैं, ध्यान रखिएगा। So the next performer is S. Natisha. Hello, this is Natisha from Mount Carmel PU College, and the name of my monologue is Lalita Supermarket. I had been applying to 2 jobs a day for about 4 months, but they wanted experience, all of them, and I had no experience. Well, I went to college and I thought that was experience, but apparently it's not. Everywhere I went, they asked, can you do Excel? Can you do PowerPoint? And it gets to the point where I get rejected for a job at Lalita Supermarket. You know Lalita Supermarket next to my house? I had this interview and I thought it went really well. They didn't. They never called me back. They said because I wasn't qualified enough. I studied engineering for 4 years. I'm not qualified enough. I even did this interning job at a real estate agency for about 3.5 months. That place closed down. That's not my fault because the owner, he just ran away with all the money. They also took the time and the patience and the care to say that selling home goods required a more complex skill set. And they were worried that I would have a hard time adjusting in terms of skill set. And I said, no, that's not true. They were like, well, that's true.
And I said, well, there are a lot of other skills that I have that can be very valuable to you. They asked, what skills? And I said, like, my personality. Exactly. My personality. I have a very good personality. I'm a people person. I am personable. I can talk to people from all walks of life. I'm smart. I went to a good college. And if you teach me how to sell home goods, I can sell home goods. They said, well, we disagree. And I said, well, you're totally wrong. And they said, well, you're the one who's actually wrong, and we are the ones who get to decide. So don't call us until we call you back. Thankfully, my days of struggle are behind me because I just got a job and it pays very well, compared to being paid nothing. Okay, I'm headed to my work. Nice talking to you. That was such an impressive performance. So the next performer is Naman Podwar. और भाई लल्लन क्या हाल चाल टीचा बढ़िया सब। अरे हम भी बढ़िया। अबे क्या होता है पिछले कुछ दिनों में कांड हो गया एक। अरे अपने मस्त इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड देखने गए थे। हाँ वही टेस्ट। ससुर अपना मस्त गुटखा चबा रहे थे, फोन पे बतिया रहे थे खूब। पता नहीं कहाँ से हजारों लाखों की भीड़ में ससुर कैमरामैन हमें ढूंढ लिया और हमारी फोटो निकाल दिया। बताओ। और निकाला तो निकाला ससुर वायरल और कर दिया। अबे पूरे कानपुर में वर्ल्ड फेमस हो गए हम। हाँ अबे गुस्सा तो इतना आ रहा था उस कैमरामैन के लप्पड़ पे लप्पड़ लगाया ससुर अपने पतलून में मुक गए। अबे क्या करते, लेकिन मामला वायरल हो गया था। वो न्यूज रिपोर्टर हमारे पीछे पड़ गए। कहने लगे सर आप गुटखा कैसे ले आए उसमें स्टेडियम में, बताओ। अबे उनको बोले फिर भैया हमको गुटखा वुटका नहीं खाया, हम पान चबाए थे अपना, तब जाकर उन्होंने पीछे छोड़ा हमारा। अच्छा ये बताओ आज क्या करने आए थे हम? इंटरोगेशन। अबे हाँ बे इंटरव्यू, ज्यादा अंग्रेजी ना गड़गड़ा, अपना काम पे ध्यान लगा, लप्पड़ लगाएंगे भेजा लौंडो को। हाँ भाई क्या नाम है? हाँ हमें पराग। पराग तो हम खा रहे हैं बे। हाँ बढ़िया नाम है, बढ़िया नाम है। अच्छा ये बताओ कहाँ तक पढ़ाई करी है? बीटेक। लो भैया बेरोजगारी तो निश्चित है तुम्हारी, हम तुमको क्यों रखे हैं? कट्टा चला लेते हो? दो भाई लल्लन इसको कट्टा दो, वहां निशाना लगाओ। हाथ तेरी इतना घटिया निशाना कैसे लगा लेते हो बे? भागो ऐसे, कुछ नहीं हो रहा। अब कैसे कैसे लौंडे उठा लाए हो, पूरे मूड खराब कर दिया। और तुमको मालूम पड़ा तो कटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी हो गई। अबे हाउस के जोश वाला कटरीना कैफ को टालेगा? जोश तो हमारा भी हाई है यार, तो हमें तो नहीं मिलती ऐसी लड़की। अब क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे लौंडों की शादी हो रही है। अरे शादी से याद आया, हमारी बहन की शादी कर दी निम्मी की। हाँ हमारी जान। अरे बहुत ही ऊंचे घर में शादी करा भाई साहब, मजा आ गया। इतना बढ़िया लौंडा ढूंढे ना मिले।
इंटरकास्ट वगैरह में तो हम विश्वास ही नहीं करते, एकदम घोर पाप है, घोर पाप। अबे इसको तो बैन कर देना चाहिए एकदम। अबे शास्त्रों में लिखा है इंटरकास्ट पाप है बे। कौन सा शास्त्र? लगा लपड़ अभी हमारा टेस्ट लोगे, भेजे लौंडो को। बकवास कर रहे बकर बकर। हाँ भाई क्या नाम है? हाँ? अबे विमल बोलो जुबा केसरी। अरे बाप रे, बढ़िया नाम है, सब पान के खानदान से उठा रहा है लगता है। अच्छा कहाँ तक पढ़ाई करी है? चौथी तक? भैया हम तीसरी तक पढ़े हैं। बढ़िया बढ़िया, दो ही लल्लन इसे भी कट्टा दो। आओ उधर निशाना लगाओ। हक दिए एकदम बे, निकलो यहाँ से। और सारे ऐसे ही शूटर लाए हो क्या बे? किसी का भी निशाना ठीक नहीं है। मतलब कोई ओलंपिक से पकड़ के लाओ यार, इतने गोल्ड मेडल आ रहे हैं आजकल। क्या बे थोड़ा सुपारी खाया, मूड खराब कर दिया एकदम। That was such an impressive performance. The next performance is Sai Suraj Chagan. हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इन चीखते चिल्लाते नारों के बीच कई सवाल थे। मैं किसे अपना मुल्क कहूँ, लोग धड़ाधड़ क्यों मर रहे थे, इन सब के मुख्तलिफ जवाब थे। एक हिंदुस्तानी जवाब, एक पाकिस्तानी जवाब, एक हिंदू जवाब, एक मुसलमान जवाब। कोई इसे 1857 के खंडर में ढूंढता, तो कोई इसे मुगलिया हुकूमत के मलबे में टटोलता है। सब पीछे देख रहे, लेकिन आज के कातिल लोहे और लहू से तारीख लिखते जा रहे हैं। ये सब बातें करते हो मैं आपसे मार खा जाऊंगा, एक काम ही नहीं करूंगा, लेकिन कल को कोई हिंदू मुस्लिम फसाद में मेरा सर फोड़ दे तो मेरी लहू की एक एक बूंद रोती रहेगी। मैं एक आर्टिस्ट हूं, मुझे अपने बदन पर ओछे शक और पत्ते गाँव पसंद नहीं। जी मेरा नाम सादत हसन मंटो और मैं लिखता हूं, आप तो जानते ही होंगे। बाज लोग मुझे मजदूर दोस्त कहते हैं, कोई कहता है कि मैं फैश वानी ऑप्शनल वल्गर कहानी लिखता हूं, तो कुछ कहते हैं कि मैं तरक्की पसंद हूं, प्रोग्रेसिव। ये क्या बेहूद की? मंटो एक इंसान है और हर इंसान को प्रोग्रेसिव होना ही चाहिए। मुझ पर यह इल्जाम है कि मैं औरत और मर्द के जिन के रिश्ते के बारे में लिखता हूं, एशियाओं के बारे में लिखता हूं, तो क्यों ना लिखूं मैं? मेरा यह मानना है कि हर उस चीज के बारे में लिखा जाना चाहिए जो आपके नजर के सामने मौजूद हो। मेरी कहानियां पढ़कर एक नॉर्मल इंसान के अंदर घटिया जज्बातों की लार नहीं टपकती है। मेरे अफसाने आपको पसंद आए ना आए, इसका फैसला आप करिए। मेरी एक कहानी मेरे दूसरे कहानी की पाए की है कि नहीं, इस पर बहस चाहे क्रिटिक्स करिए, लेकिन अदब यानी लिटरेचर हर किस फैश नहीं हो सकता। मुझ पे कई मुकदमे भी चल चुके हैं। लोग अक्सर मुझसे आगे पूछते हैं कि आप ऐसी कहानियां क्यों लिखते, तो क्यों ना लिखूं मैं? क्यों ना लिखूं मैं वैश्याओं के बारे में? क्या वो हमारे माशरे हमारे समाज का हिस्सा नहीं है? उनके यहां मर्द नमाज या भजन तो करने नहीं जाते। अच्छा, उनको वहां जाने की पूरी इजाजत है, हमको उनके बारे में लिखने की नहीं। क्यों नहीं? अरे जो चीज जैसी है उसे वैसी क्यों ना पेश किया जाए? टाट को रेशम क्यों कहा जाए? अरे लो, आप तो बुरा मान गए। अरे हकीकत से इनकार करना क्या हमें बेहतर इंसान बना देगा? मुझ पर चले गए मुकदमे में प्रोसिक्यूटर साहब ने एक बात पे बड़ी जोर डाली कि मेरी कहानियों के कुछ किरदारों की जबान गालियों से भरी पड़ी है। अब जो अल्फाज मैं अपने किरदारों से कहलवाया हूं, क्या आप रोजमर्रा की जिंदगी में वही अल्फाज हजारों लोगों के मुंह से सड़क पर नहीं सुनते? ये जरूरी है कि जमानों के करवटों के साथ साथ अदब भी अपना करवट बदले। फ्रांस के मशहूर नॉवल निगार गुस्तावो फ्लॉबर्ट की किताब मदामे बुआरी पर भी फैशी के इल्जाम लगे थे। जेम्स जूस की किताब यूलिसिस को भी फैशी के इल्जाम झेलने पड़े थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो वाली से लेकर गालिब तक सब पर कभी ना कभी इस तरह के इल्जाम लगे हुए थे। इसलिए ये कोई
नई बात नहीं है। मैं बनाव श्रृंगार करना नहीं जानता, ना ही किसी की जलालत पर स्त्री करना जानता। नीम के पत्ते कड़वे सही पर खून तो साफ करते। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरे अफसाने एक आईना है जिसमें समाज अपने आप को देख सके। हाँ, किसी बुरी सूरत वाले को आईने से ही शिकायत हो तो उसमें मेरा क्या कसूर? जमाने के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अगर आप उससे नावाकिफ है तो मेरे अफसाने पढ़िए। अगर आप मेरे कहानियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि यह जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कोई हंगामा नहीं पसंद करता, ना ही कोई सेंसेशनलिस्ट हूं। मैं उस समाज की चोली क्या उतारूंगा जो पहले से नंगी है। उसे कपड़ा पहनाना मेरा काम नहीं है। मैं काली तख्ती पर सफेद चौक से लिखता हूं ताकि काला ब्लैक बोर्ड और भी नुमाया हो जाए, और भी नुमाया हो जाए। That was such an exceptional performance. So now the next performing artist would be Vidhi Mistry. माँ प्लीज स्टॉप सेइंग दिस कि मीता बिल्कुल ठीक है। हम सब अच्छे से जानते हैं कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लेकिन एक सेकेंड, आप लोगों के अकॉर्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस मतलब सिर्फ मारना होता है, राइट? जब तक शरीर पे चोट ना आ जाए तब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन जो चोट दिल और दिमाग पे लगती है वो आपके लिए मायने नहीं रखती। हमें अच्छे से पता है कि मीता का हस्बैंड रोज उस पर हर छोटी छोटी बात के लिए कितना चिल्लाता है। सिर्फ तभी नहीं जब वो दोनों अकेले होते हैं, बल्कि दूसरों के सामने भी वो कोई मौका नहीं छोड़ता है उसकी इंसल्ट करने का। कभी सोचा है आपने कि मीता पे क्या बीतती होगी? कभी पूछा है उससे? नहीं, उसके घर का आपसी मामला है ये कह के छोड़ देते। चिल्लाना, हर बात पे डांटना या इंसल्ट करना, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में ही आता है। क्या किया था आपने पिछली बार जब मैं उसके हस्बैंड को टोक रही थी उसके ऐसे बर्ताव के लिए? मेरा हाथ पकड़ के मुझे ही रोक दिया। क्यों? कहीं लिखा है ऐसा कि वाइफ्स की ड्यूटी अपने हस्बैंड के ताने सुनना या उनका गुस्सा झेलना? सब में अपने लिए खड़े रहने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन हम जैसे दूसरे लोग ये जानते हुए कि हमारे किसी दोस्त या नेबर के साथ ऐसा गलत हो रहा है और फिर भी चुप रहे या इग्नोर करे, तो इसमें हमारी गलती है। इसलिए अगली बार से मुझे रोकने के बजाय अगर आप उसके हस्बैंड को रोकेगी और समझाएगी ना, तो ज्यादा हेल्पफुल होगा। आज चॉकलेट नहीं लाए शुक्लताई जी? कहा कहा देंगे? यहाँ या बाथरूम में? क्यों याद नहीं आ रहा? मैं याद कराती हूँ। मेरी प्रिंसेस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की है। मेरी बच्ची। याद आया? अपने हाथ मेरे मुंह पे से दबा के बंद कर देते थे ताकि मेरी चीख बाहर ना जाए, कोई सुन ना ले, इसलिए जोर से दबा के मेरी आवाज बंद कर देते थे। आवाज नहीं करना। You want me to shut up? Shut up!
तो होता रहता है, ऐसा होता रहेगा। तो क्या है ना, आई एम नॉट ओके विथ इट। ये दुनिया जहाँ ये सब होता रहता है, आई एम नॉट ओके विथ इट। क्या सच क्या झूठ कुछ पता नहीं चलता, सब सब मिक्स्ड है, सब कंफ्यूजन है यहाँ पे। नो, I will not remain sensible. I am stupid and I will remain stupid. Sensible. बेटा, बाहर जाओगे तो केयरफुल रहना। दुनिया में बहुत बुरे लोग होते, लड़की को ना हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। तो ये क्यों नहीं बताया कि मुझे घर पे भी केयरफुल रहना था? ये क्यों नहीं बताया कि मुझे आप लोगों से भी बच के रहना था? यहाँ तो एक्सपोज थी मैं, घर पे थी मैं, बताया नहीं मुझे। बेटा केयरफुल रहना। तो नहीं रहना मुझे सेंसिबल, मैं पागल हूँ, बेवकूफ हूँ, पर मैं ना आप लोगों में से एक नहीं हूँ। OMG, that was such a sentimental performance that almost made me cry. So, Viti, I have a question for you. I so like we are just curious to know that how was your experience for you shared the screen with Sushmita Sen. So, Yeah. like, how was your experience? Okay, so firstly, I'll tell you that she's a sweetheart. She's so good, and I mean, I don't think so. Words are gonna be enough to describe her and her aura and her presence because she's she's lovely. She has been a mother to me on set all the time. She used to tell my mother, stop worrying about her, I'll take care of her, I'll feed her and everything. So she was wonderful. And yeah, we still keep talking and stuff, and yeah, I miss her. But I'll tell her about this too. So I have a question for Ayush. You have played so many mythological characters. So where do you seek it from? See, I mean seek from it. Am I Okay, audible so to you? yes, you're audible. So I'll repeat the question. So the question is like that you played many mythological characters, right? Correct. So like, Correct. what do you seek from it? Every character is different actually. Like there are several things that you can learn from a character, like boon and curses. So, but at the So end, like, would you like to share something about your experience? Like with mythological characters, like what did you learn? Or I know that those were different mythological characters, but we learn many things from different characters. like I played Ashwatthama in Mahabharata. So from that, I learned that that character was never satisfied from anything. How much ever he got, he wanted more. So there was no satisfaction in him. And
and I played Sam, Lord Krishna's son in Suryaputra Karan, which portrayed a love story kind of thing, and he had hatred for his father. But somehow or other, Lord Krishna was correct. So that showed a hatred between father and son. With So I'm just it's just so amazing that we learn so much from these different characters and being different ourselves. Like we are just portraying the characters. And I would just love to get to know you someday. And with you, ma'am, like it would be amazing if you could just share this to Shushmita, ma'am. Okay, so we'll just go on. We'll just go on with our next performance. We have Yash Kumar performing for us next. So, Wendy, I have a question for you. Okay, so we'll just go on. बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू होता है। ये भयानक जंगल है, बहुत भयानक, जहां मछलियां घास चर रही हैं, सांप उड़ रहे हैं, अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं, बिल्कुल अजीब। और इन सब आवाजों को चीरती हुई ठंडी हवा, ठंडी हवा बह रही है और दूर से एक साया, लंबा साया चला आ रहा है। जिसकी छोटी छोटी बटन जैसी गोल आंखें हैं और एक लंबी सी नाक है। तभी बिजली खड़की और बारिश की ये मोटी मोटी बूंदें जमीन पर गिरने लगी और वो साया मेढक बन गया। और फुदक कर वहां से भाग गया। हाथी, चीता, शेर, भालू, इन जानवरों से अब डर नहीं लगता। अलबत्ता ये सब खिलौनों की शक्ल में हो। बच्चे तक नहीं डरते फौजी, सिपाही, चोर और डाकुओं से। What was that guy's name? That was such an impressive performance. So the next performance is by Suchi. His name was Yash Kumar. 20 सालों से खिलौने बनाते बनाते ये सभी खिलौने मुझे औरत लगने लगे। औरतों से भी तो कोई नहीं डरता। कितने नाजुक होते हैं खिलौने। औरतें भी तो होती हैं नाजुक। यहाँ खरीदा, यहाँ तोड़ा। बहुत कोशिश की कि कोई ऐसा खिलौना बनाऊं जिससे सब डरे, कम से कम बच्चे तो डरे ही। खतरनाक चेहरे वाले राक्षस बनाए,
दांत निकले हुए दैत्य बनाए, लेकिन इनसे कोई नहीं डरा। बच्चों ने तो मजे ले लेकर जानबूझकर तोड़े उसके दांत, फिर कान, फिर आंखें निकाल दी चुड़ैल खिलौने की, कपड़े फाड़ डाले उसके। अरे क्या कर रहे हो? तुम्हें तुम्हें शर्म नहीं आती? चुड़ैल है, खिलौना है तो क्या है, तो औरत ही। इस पर बच्चे खिलखिलाकर हंस दिए, बोले हमने खरीदे हैं, हमारे खिलौने हैं, हमारे मन में जो आएगा हम करेंगे, हम औरत से नहीं डरते। ये सुनकर मैं सहम गई। सहमी सी ही तो रही है मेरी यतीम खाने की जिंदगी। अनाथालय की एक महिला कर्मचारी ने सुनाई थी मेरे यतीम खाने पहुंचने तक की कहानी। दिल्ली के करोल बाग में रेफ्यूजी कैंपों में होती थी लावारिस और मजबूर औरतों की जजगी, खास तौर पर उन औरतों की जो अवैध रूप से पेट से होती थी। मेरी माँ भी सन 47 की आज़ादी में कई मर्दों की भेंट चढ़कर उस कैंप में मुझे जनने आई थी। लड़की हुई है सुनकर उसे अपने औरत होने का एहसास हुआ। उसने देखा मेरे आजाद भारत का भविष्य। उसने देखा 70 साल बाद दिल्ली में ही निर्भया नाम की लड़की का हश्र। झट से उसने मुझे दूसरी औरत के बगल में लिटा दिया जो अभी अभी एक मरे हुए बच्चे को जन्म देने के बाद बेहोश थी। मेरा भाग्य तो देखिए, मेरी दूसरी माँ भी कुछ घंटों बाद मर गई। दाई ने मुझे मेरी माँ को वापस लौटाना चाहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, और देखते ही देखते मैं अपनी माँ के सामने यतीम खाने पहुंचा दी गई। बस वहीं से खिलौनों से खेलने की उम्र में दान में मिले खिलौनों को जोड़ रही हूँ। Wow, that was so powerful. Ayush, I'd like to ask, could you throw some insight on your next international film, Night and Fog? Sure. We shot this film before the lockdown, and the film is shot in English, Hindi, and French, where I'm playing the lead. I'm playing double role of Ayan and Kazan, and the role of my father has been played by Rahul Roy. The music is of A.R. Rahman, and Tochi Rana has done the Sufi song in the film. So there are three love stories shown in the film, like or a character like Kazan. He loves three different characters in the film. I'm sure we would be, delighted to watch that movie. I just hope it Viti, releases this year. yes, we also hope that. And we hope that we would get to watch it in theaters. Viti, I would love to have a sneak peek on your next projects, Thoda personal favor. Sure. So basically, I just did a movie in Telugu. First time doing a Telugu thing. So yeah, pretty excited about that. The songs are coming out if you have watched them. And if you're not, then just go and watch them. So yeah, it's coming out. Let's see how it goes, and whatever it is, you'll see it on social media. I would love to hear them. I just have not yet, so I'll just check them out. So
continue with our performances. The next performer is Najia Ahmed. But like, I'm thinking if I should just slit your throat and do it very quickly and enjoy the excess of blood flow, or should I just like do it slowly and enjoy every drop of blood that falls down and hear the noise every drop makes? You see the dilemma I was talking about, right? It's like, I don't even know. Like, should I just rip your tongue off? Should I just like snip it like that? Because that would make things a lot more easier for me. You wouldn't be able to talk, and I wouldn't be able to hear you talking nonsense on and on, because hearing you talk nonsense makes my ears bleed and makes my head want to explode. And you know what I want to do when things make me feel like exploding? Just want to kill them. But before killing you, I mean, obviously I am going to kill you, but like, I want to know. I want to know what they did. I bet you're thinking of asking me to show you mercy, but why would I show you mercy? Mercy got my family killed in their sleeps. They showed mercy to you. You, maggots like you. They showed mercy to you and it got them killed. Mercy is for the weak. And I am definitely not weak. Like, you can see, I am not weak at all. Like, look at where I am. Look at where you are right now. You know, I can just stab this inside your neck and end it all for you. But then it's so sad. Boo-hoo, I kill you and then you die, and then your little kid mourns you for like the rest of his life, which is very deserving. But after that, you're just gone. You're a nobody. You're non-existent. No one misses you. I for sure don't miss you, because I am the one who put you in your grave, and I'm sure I will come to your grave every day and leave a damn rose, hoping that even the thorns of the rose haunt you. So why exactly was it that you killed my parents in their sleep and my little family? Like, I know I'm supposed to feel sad about it, but right now I'm just so focused on killing you that I can't think of anything else. That impulse inside me to just hear your veins pop and break is killing me. To see or not to see? Should I just rip your little eyes out so you can come to me running like a blind man, and then we can play catch, and if I win, I get to slit your head out. That was an insane performance. So I'd like to call Janvi Bilagi for the next performance. मेरा दादा जान एक कहानी सुनाया था। तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को ये कहानी जरूर बताएं। वो माउंटेन क्लाइंबर था मेरा दादा जान। वो किसी से चढ़ाई से पहले सोच समझकर पूरी तैयारी पूरी जानकारी के साथ निकल गई। लेकिन प्यारीलाल जी ऐसा नहीं था। प्यारीलाल जी मेरा दादा जान की बहुत पुराने दोस्त। माउंटेन क्लाइंबिंग का उन्हें भी बहुत शौक था। प्यारीलाल जी के सबसे बड़ा ख्वाब था मुश्किल से मुश्किल पहाड़ चढ़ना, माउंट एवरेस्ट। स्ट्रेट आखिर एक दिन उन्हें माउंट एवरेस्ट चढ़ने का मौका मिली, एक चाइनीज ग्रुप के साथ। प्यारीलाल जी ना सोचा ना समझा ना तैयारी की, छत से हाँ बोल दिया और फट से निकल गए। लेकिन चढ़ाई का ग्रुप चाइनीज था तो सिर्फ अपने जबान में बात करते थे, नो इंग्लिश विंग्लिश। तो साथ में चढ़ाई शुरू हो गई। चढ़ाई का ग्रुप धीरे 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 पहाड़ पे चढ़ने लगा। प्यारीलाल जी
फुल जोश, और सबसे आगे निकल गए। चीनी चाइनीज में हाथ हिलाकर चला रहे थे, आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, हटाओ हटाओ हटाओ। लेकिन प्यारीलाल जी को लगा कि वो कह रहे हैं बढ़े जाओ बढ़े जाओ बढ़े जाओ, और दूर निकल गए। चीनी चला रहे थे, हटाओ हटाओ हटाओ। आपको चाइनीज आती है? नहीं? Then this works. हंसो मत, आगे सुनो। अचानक प्यारीलाल जी के सामने एक गुर्राटे हुए स्नेह पड़ा गया। प्यारीलाल जी, I mean, you are very scared. और वो हाथ लाकर चला रहे थे, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन चाइनीज को लगा कि वो जोश में वेव कर रहा है, सबसे आगे निकल जाने की खुशी का आसार। So he kept crying for help, and the Chinese kept waving back. Then स्नो लेपर्ड बेचारे प्यारीलाल जी को खा गया। या भूखा था ना, माउंट एवरेस्ट में ज्यादा लोग आता नहीं। और दोस्त चला रहे थे, आगे मत जाओ आगे मत जाओ। पर ये अजीब कहानी नहीं है। तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताओ कि कभी कभी हम लाइफ मुश्किल रास्ता सिर्फ इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमें लगता है इम्पोर्टेंट चीजें पाने के लिए हमें मुश्किल रास्ता अपनाना चाहिए। अपने आप को पनिश करना जरूरी समझाता है। But why? आसान रास्ता क्यों नहीं चुन सकता? क्या बुराई है उसमें? खास करके जब उस मुश्किल रास्ता सामने आए तो हम तैयार ही नहीं है। मुश्किल के पहाड़ क्यों चढ़ना है? तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को ये कहानी जरूर बताएंगा ना? इट्स इम्पोर्टेंट। That was a mesmerizing performance. And alas, not a last but not the least performer we have is Vishali Rana. Yes, action. Love me. Love me not. Love me. Love me not. Love me. हाँ, समझ नहीं थी उस उम्र में, और किसे होती है समझ उस उम्र में। उम्र होने पर भी किसे समझ आती है ये बात? प्यार की परिभाषा हर इंसान के अनुभव अनुरूप होती है। जिससे अच्छा अनुभव होता है स्वाभाविक है उसके लिए प्यार अच्छा ही होगा, और जिसे बुरा अनुभव होता है उसके लिए वो बुरा होता है। तुम मुझे भूल भी जाओ, हक है तुम्हें, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। हिंदी फिल्मों में जैसे हीरो हीरोइन को फूल देता है ना, वैसे एक बार माधव ने मुझे दिया था और बोला आई लव यू। प्यार प्यार क्या होता है वो समझने की उम्र नहीं थी मेरी, पर जैसे ही उसका हाथ मेरी ओर गुलाब देने के लिए बढ़ा, मानो बदन में कपन सी उठी और आंखें भर आई। मुझसे कोई प्यार करता है, इसकी कल्पनाएं हवा में तरकते हुए मोर की पंख की तरह मुलायम थी। मैंने उसका हर जन्मदिन मनाया और खुद बिलेटेड हैप्पी बर्थडे का इंतजार करती रही। फिर भी मैंने उसका हर बर्थडे सेलिब्रेट किया, क्योंकि प्यार करती थी मैं उससे। पहले ना मेरे बाल बहुत लंबे थे और उस समय मुझसे उसने कहा
कि तुम्हारे ये लंबे बाल कितने सुंदर हैं, और तुम भी। अगले दिन घर जाने पर माँ ने मुझसे कहा, तू बाल छोटे कर, सुबह चोटी बनाने में तकलीफ होती है। अगले दिन से जैसे तैसे मैं अपनी चोटी बनाकर स्कूल जाने लगी। फिर एक दिन उसने मुझसे आके कहा, तू बॉब कट कराएगी ना तो बहुत अच्छी लगेगी। उसी दिन पार्लर में जाकर मैंने बॉब कट किया। अगले दिन वो मुझे स्कूल में देखते ही चिल्लाया, बोला, ये क्या किया तुमने? मैंने कहा, अरे तुमने ही तो कहा था बॉब कट करने के लिए। उस पर वो बोला, अगर मैं तुम्हें नदी में कूदने बोलता तो कूद जाती? हाँ। ये बोलने से पहले ही वो जा चुका था। पर सच में अगर वो मुझे नदी में कूदने कहता ना, कूद जाती, सिर्फ उसके लिए, क्योंकि प्यार करती थी मैं उससे। हमारे स्कूल में एक बार चित्रकला स्पर्धा थी, और उस स्पर्धा के लिए रात भर जाग के मैंने एक नाचते हुए मोर का चित्र बनाया, और वो चित्र बड़े अभिमान से जाके सबसे पहले उसे दिखाया। उसने वो चित्र देखते ही मांगा। मैंने भी बिना सोचे समझे दे दिया। उसने उस चित्र पर अपना नाम लिखकर स्पर्धा में भाग लिया। न उसने न मैंने किसी को कुछ कहा। स्पर्धा में उसे पहला नंबर मिला, और बख्शिश के तौर पर एक रंग बिरंगी पुस्तक। मैंने उससे कहा, दिखाओ ना मुझे। उसने दिखाई, दूर से, छूने तक नहीं दिया मुझे। तब मुझे समझा प्यार का मतलब क्या होता है। छोड़ो। That was an intense performance. And This is your host speaking. We are just a few moments away from the results. after watching so many performances, I definitely feel like taking up acting as a class, acting classes. I mean, this is too much. So now let's give our judges 5 minutes to calculate the scores. Stay tuned, guys. We'll be back in 5 minutes with the results. By that time, I would like to request our judges to express their thoughts about this event and all the performances. So, first, Vriti, would you like to go first? Ma'am, you're on mute. Yeah, tell me. Okay, first should I enter the scores first on the on the sheet? Yes. Okay, so Just we'll let take me 5 minutes. We'll take 5 minutes break for scoring the results, and then we'll continue with the Okay. event. Yeah.
The first runner-up is Ankul Mishra, and Uncle Mishra. Ankul, Okay. Ankul, Yeah, got it. Anukul Mishra, Got it. and the second runner-up is Yash Kumar. Okay, Ayush, how do you want to take this? You want to say them or you want me? Ayush, you want to say the first runner-up? Ladies first. Ah, so sweet. Okay, the first runner-up is Ankur Mishra. The second runner-up is Yash Kumar. And the winner is And the Naman winner Porwal. is Naman Porwal. Just Naman had more efforts. He put in more efforts in this. So it was was very good. And I have the reason also why for me he was a winner, because uh, he made that ambience, the scene, into a proper Bihari thing. He dressed it also like that. His tone was also like that, and chewing that pan and stuff. Very And true. his accent was also Bihari. So he Yeah, was a winner that time only for me. very true. So, Vriti, would you like to give us some insight on why did you choose Naman Purwal as a winner? Because you see a potential in a person and you can see that they are making through already. So and it's a big deal when you are acting or doing any of this sort of thing. You have to make sure you are good at every single thing. You cannot lack at one thing, and it's just like you have to be equal at every single thing, and he was for me. And he took care of every single thing with his accent to how he delivers it. So yeah. And especially while he was delivering it, he didn't change his expression. So what happens is actually, like, when you're doing it and it's not your original accent, you tend to give not a better, like, you cannot do better acting while giving that accent too. So but he did it, and that's a big deal. And his body language also did match what he was saying. Exactly. I mean, he kept every single thing in a line. So yeah. Correct. We are so glad to hear so many good comments about them. And I would like to congratulate to each and every participant who took the initiative to take part in this event. Yeah. Anyways, we have reached the end of the event. And we would like to thank our judges for being here with us today. This event would be incomplete without you all. Thank you And so not to much for mention our having beloved us. part and not to mention our beloved participants. I'm still not getting over the fact कि इतने talented लोग आते कहाँ से हैं यार?
And we would like to also thank our audience for staying with us until the end of this event. हम हैं राही प्यार के फिर मिलेंगे साथे साथ. Stay tuned. We'll be back tomorrow for Sattva, our final day 3 with more energy and have more fun with us. For the day, Thank we you would so like to much. say have a good evening and adios. Thank you. Thank you. Thank you so much. Pleasure's all mine. Thank you.